नमो भगवते वासुदेवाय। पञ्चमस्कन्दः अथ तृतीयोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। नाभिरपत्यकाम अप्रजया मेरुदेव्या भगवन्तं यज्ञपुरुषम् अवहितात्मा जत तस्य ह भावश्रद्धया विशुद्धभावेन यजद प्रवर्ग्येषु प्रचरस्तु द्रव्यदेशकालमन्त्रत्विग्दक्षिणा अविधानयोगोपपत्त्या दुरधिगम अपि भगवान् भागवतवात्सल्यतया सुप्रतीक आत्मानमपराजितम् निजजनाभिप्रेतार्थविधिस्तया गृहीतहृदयो हृदयं गमम् मनोनयनानन्दन अवयवाभिराममाविश्चकार अधः तमाविष्कृत भुजयुगलद्वयं हिरण्मयं पुरुषविशेषं कपिशकौशेयाम्बरधरम् उरसि विलसच्छ्रीवत्सललामं दरवर वरवनरुह वनमाला च शूर्यमृदमणिगदादिभिरुपलक्षितं स्फुटकिरण प्रवर मुकुड कुण्डल कडग कडी सूत्रहार केयूर नूपुराद्याङ्गभूषण विभूषितं ऋत्विक्सदस्य गृहपदय अधना इवोत्तमधनम् उपलभ्य सबहुमानम् अर्हणेन अवनदशीर्षाण उपतस्थुः ऋद्विज ऊचुः अर्हसि मुरुहर्हत्तमार्हणाम् अस्माकम् अनुपथानां नमो नम इत्येतावत्सदुपशिक्षितं क अर्हति पुमान् प्रकृतिगुणव्यधि करम् इतिरनीश ईश्वरस्य परस्य प्रकृतिपुरुषयोरर् अव्वाक्तनाभिर्नामरूपाकृतिभिरूपनिरूपणम् सकलजननिकाय वृजिन निरसन शिवतम प्रवर गुणगणैकदेशकथनादृते परिजनानुराग विरचित शबल शब्द सलिल सिद किसलय तुलसी कादुर्वाङ्गुरैरपि संवृदया सपर्यया किल परमपरितुष्यसि अधानयापि न भवद इज्यरोरुर्भारभरया समुचितम् अर्थम् अहोपलभामहे आत्मन एवानुसवनमञ्जस अव्यतिरेकेण भो भूयमाना शेष पुरुषार्थस्वरूपस्य किन्तु नाधाशिष आशासानानाम् औतभिसंराधनमात्रं भवितुमर्हति तद्यदा बालिशानां स्वयमात्मनः श्रेयः परमविदुषां परमपुरुष प्रकर्षकरुणया स्वमहिमानं च अपवर्गाख्यमुपकल्पयिष्यन् स्वयं नापचित एवेतरवधिगोपलक्षितः अधायमेव वरो ह्यर्थत्तम यर्हि बर्हिषि राजर्षेर्वरदर्शभो भवां निजपुरुषे क्षणविषय आसीत् असङ्गनिषिद ज्ञानानलविधूदाशेषमलानां भवत्स्वभावानाम् आत्मारामाणां मुनीनाम् अनवरद परिगुणित गुणगण परममङ्गलायन गुणगण कथनोऽसि अथ कथञ्चित् स्खलन शुत्पदनजृम्भण दुरवस्थानादिषु विवशानां न स्मरणाय ज्वरमरणदशायामपि सकलकश्मलनिरसनानि तव
गुणकृतनामधेयानि वचनगोचराणि भवन्तो किञ्जायं राजर्षिरपत्यकामप्रजां भवादृशीमाशासान ईश्वरमाशिषां स्वर्गापवर्गयोरपि भवन्तम् उपधावति प्रजायामर्थप्रत्ययो धनदमिवाधन फलीकरणं को वा इहत्य अपराजितया मायया अनवसितपदव्यानावृतम् विषरयाम् अनावृत प्रकृतरनुपासितमहच्चरणः यदुह भाव तव पुनरभद्रकर्तरिह समाहूतस्तत्रार्थधियां मन्दानां नस्त्यद्यद्देवहेलनं देवदेवार्हसि साम्येन सर्वान् प्रतिवोढुमविदुषाम् श्रीशुक उवाच इति निगदेनाभिष्टूयमानो भगवान् अनिमिषशर्भो वर्षधराभिवादिता अभिवन्दितचरण सदयमिदमाह श्रीभगवानुवाच अहो बदाहमृषयो बभद्भिरद्विदधगर्भिरवर असुल अभियाचितो यदमुष्यात्मजो मया सदृशो भूयादिति महाममाहमेवाभिरूपकैवल्यारधाभि ब्रह्मवादो न मृषा भवितुमर्हति ममैव हि मुखं यद्विजदेवकुलं तद आग्नीन्द्रिय अंशकलयावतरस्यामयात्मतुल्यमनुबलभमानः श्रीशुक उवाच इति निशामयन्त्य मेरुदेव्या पदिमभिधायान्दर्धते भगवान् बहिर्षि तस्मिन्नेव विष्णुदत्त भगवान् परमर्षिभिः प्रसादितो नाभे प्रियचिकीर्षया तदवरोधायने मेरुदेव्यां धर्मान् दर्शयितु कामो वादरशनानां श्रमणानामृष्याणमूर्ध्वमन्थिनां शुक्लया तनुवावददार इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे नाभिचरिते ऋषभावतारो नाम तृतीयोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते।